Yeah, welcome back, students. Let's move on to the third question. Question is on the screen. Journalize the following transactions in the books of Rumney and Company, 31st March 2012. Okay, so these are the transactions that is given. These are the dates: 30th 11, 27 12, 13th January, 27th January, 19th Feb, and 31st March. Okay, the transactions are mentioned. Export goods of 60,000 US dollars to Jackson Limited. So ये तो sales हुआ है, ठीक है. और 30th 11 को exchange rate कितना है? 47. Okay, don't forget that. Next, 27th. Yeah, so this will be my first transaction. ठीक है. Second transaction, import goods. Okay, 40,000 US dollars from Max Limited. Okay, and that day exchange rate was how much? 48. Next, received 25,000 US dollars from Jackson Limited. तो जैक्सन से मैंने क्या किया था? सेल्स किया था, राइट? और 13th को पेमेंट मिला. तो जिस दिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, that day the exchange rate was how much? 47. करेक्ट? या. और जिस दिन पैसा मिला, कैश रिसीव हुआ, उस दिन एक्सचेंज रेट कितना था? 50. तो मुझे तो प्रॉफिट हो गया है 3 रुपीज का, राइट? या. नेक्स्ट, 27 जनवरी. So this is my second transaction, this is my third transaction, and this will be my fourth transaction. Okay, paid to Max Limited. Max से मैंने खरीदा था, import किया था goods, और import वाले दिन मेरा रेट कितना था? 48 रुपीज. और जब मैं पैसा पेमेंट कर रही हूँ, that day I had to pay 49 rupees. So I had to pay 1 rupee more. So there is a loss of 1 rupee. Okay. Next, 19th Feb. Again, received from Jackson Limited 25,000 US dollars. तो जैक्सन से मैंने 47 में लिया था. ओके, गुड्स का डील हुआ था 47 में, और मैं उसको I am going to receive 45 rupees. So I'm going to receive 2 rupees less. Compare with this. So 2 rupees less. So this is my loss. Okay. So transaction number 5. And last, transaction number 6. 31st March. Paid 20,000 US dollars to Max Limited. Max से मेरा डील कितने पे हुआ था? 48 पे हुआ था. करेक्ट? ये रहा. और पेमेंट करते वक्त मेरे को उसको 49 रुपीज देना है वापस. देयर इज अ लॉस ऑफ 1 रुपी. Okay, so this is how you have to compare your loss and your profit. Okay, so I hope this part is clear to everyone. हाँ, तो ये सब एक्सचेंज रेट से इसके सामने और उसके पेमेंट्स किए हुए हैं. ठीक है. या, so let's start with journal entry number 1. Yeah. Okay, so just make a note of this. Journal entry number 1. Okay, sold goods. Yeah, goods exported. Okay, yeah. Show you the calculations also. Yeah, first wala it is 60,000 into 47 rupees. Okay, so 60,000 into 47. 28,20,000, right? Second transaction is of import, that is purchase. So 40,000 and the rate is 48. So 40,000 into 48. 19,20,000. Okay. 40,000 into 48. Okay. Third transaction is 25,000. Okay. And exchange rate कितना है? 50. तो 47 के सामने I am going to receive 50. तो मेरा तो 3 rupees का प्रॉफिट हो गया, right? Yeah. So 25,000 into 50. 12,50,000. Okay. 25,000 into 50. Right? And profit, 3 रुपया profit after every dollar. So 25,000 into 3 rupees. 75,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है.
ओके, ठीक है, एंड 25,000 into the deal was at 47. So 25,000 into 47, 11,75,000. Okay, so this is my third transaction. Then this is my fourth transaction. Fourth transaction, yeah, $20,000. This one, $20,000, and the rate is 49. Okay. So $20,000 into 49. So it's 9,80,000. Okay. And 20,000 into 1 rupee loss, so 20,000. And how much you are receiving? 20,000 into 48 rupees is the exchange rate that day. So 9,60,000. Okay. Narration will not change. Being money received, exchange rate difference, $1, 1 rupee, and loss transferred to FEF. Okay. Then comes my journal entry number 5. So money received, 25,000 into that day exchange rate was 45. Okay. और हमारा डील हुआ था 47 पे, 47, और मिल रहा कितना है 45, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस. ओके, so 25,000 into 2, 50, and here it will be 25,000 into 47, 11,75,000. Okay. Narration, being money received, exchange rate difference, $1 equal to 1 rupee, and loss transferred to FEF account. Okay. So I hope these are all recurring entries. We have seen in earlier two sums also. All are recurring entries. Yeah. Then journal entry number 6. Yeah. So 20,000 US dollars into 48 rupees that day, 9,60,000. $20,000 into 1 rupee loss, and 20,000 into 49, 9,80,000. Then journal entry number 7, $10,000 into okay. Now I'll tell you from where does this difference come. This journal entry arises from where. Okay. Right. Now this is something new, students. ये journal entry number 7 जो है ना, ये कुछ नया है. ओके, क्यों नया है उसका मैं रीजन भी बताती हूँ. ठीक है, अभी ध्यान से देखो.
बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है 31 मार्च 2012। ओके, वो आपका लास्ट डेट भी है। लास्ट डेट को एक्सचेंज रेट कितना है 49। ओके, नाउ सी, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इसके सामने। Now there are two parties with you. One is Jackson and the other person is Max. Okay? तो जैक्सन से मैंने क्या किया है, जैक्सन से मैंने एक्सपोर्ट्स किया है। आई हैव एक्सपोर्टेड गुड्स टू जैक्सन। ओके, डील हुआ था 30/11 को, कितने का 60,000 यूएस डॉलर्स। ये हमारा डील था। और इसके सामने पैसा कैसा मिला है 3 इंस्टॉलमेंट में मिला है, बराबर ना। हाँ, तो ना जस्ट पे अटेंशन। द फर्स्ट installment was received on 31st, yeah, as per the question, 13th January, 25,000. Second installment was paid on 19th January. Okay, so $60,000 के सामने आप, sorry, $60,000 के सामने, what is wrong? Yeah. Again, $60,000. I have first paid $25,000. I have received money for $25,000. Then next I receive money for $25,000 again. So $10,000 का अभी भी गैप है, जो पैसा अभी भी नहीं मिला है। ओके, तो अभी ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च। हाँ, तो इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा हिडन एंट्री का। आई रिपीट, $60,000 का सेल्स हुआ है और इस सेल्स के सामने पैसा कितना मिला है $25,000 का और $25,000 का। तो ये $10,000 अभी भी पेंडिंग है, जिसका पैसा हमको नहीं मिला है। तो वो जर्नल एंट्री आपको पास करना है, दिस वन हियर, जर्नल एंट्री नंबर 7। ओके, फॉर जैक्सन। सो 10,000 का गैप है। ओके, 47 में डील हुआ था और 31 मार्च को एक्सचेंज रेट है 49। सो 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे को 2 रुपया ज्यादा मिलेगा ना। 47 पे डील हुआ था मेरा और 31 मार्च को I will assume this entry to be closed. So deal 2 rupees more I am getting. Okay, so this has to be recorded. So my journal entry will be Jackson Limited account debit to FEF account. Am I clear to everyone about this? Journal entry number 7. This is very, very, very important. So you have to even check कि जो आपने डील किया है उसके अगेंस्ट पूरा पैसा आना चाहिए। नहीं आया है तो वो जो गैप है, you have to pass entry for that. So like in this sum, $10,000 is the gap, and for every dollar there is 2 rupees profit. So 20,000 का entry pass हुआ है. So being transfer of balance in FEF account. Okay. Working note number 1, you can write that. Fine. I hope this part is clear to everyone. Now similarly, you have to check for max also, because max के साथ मैंने क्या किया है, max के साथ मैंने imports किया है। ठीक है, कितने का इंपोर्ट हुआ था 40,000 का, और 40,000 के इंपोर्ट के सामने मैंने 2 बार पेमेंट भी कर दिया, $20,000 और 20,000। तो ये तो टैली हो गया। 40,000 के अगेंस्ट 40,000 सब पेड हो गया, फुल्ली पेड है। तो यहाँ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ओके, अगर यहाँ भी कुछ पेंडिंग होता तो मेरे को उसका एंट्री डालना पड़ता। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, दैट्स इट। And the last entry will be the FEF balance entry, which you get from FEF account. Okay, so wherever there was FEF account, okay, so 1 2 3 4 5, so there are 5 transactions where FEF account was there. So you have to give the posting, post it in the ledger, and you will get your answer. So it's 20 plus 50,000 plus 20,000 again. So 90 minus 75 minus 20. तो 5,000 प्रॉफिट है। ओके, सो ये पीएनबी में जाएगा। सो माय जर्नल एंट्री विल बी एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ओके, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल।
Don't forget this, huh? Wherever there is FAF account passed in the journal entry, give the posting in the ledger account. Okay, so there are 5 journal entries which will be posted, and the difference will go to P&L. Okay, and you have to pass journal entry for that. Yeah, and just concise this. Journal entry number 8, FAF account debit to P&L account. Okay, being balance in FAF account transferred to P&L. Okay, so I hope these journal entries are clear to everyone. Yeah. So in the next video, we'll come up with a new variety of sum. So the newness in this sum was this journal entry number 7. Okay. Yeah. So in short, जो भी आपका डील हुआ है, जितने भी यूएस डॉलर्स का, जितने भी डॉलर्स का, उसके अगेंस्ट पूरा पेमेंट टैली होना चाहिए, मनी रिसीव्ड या तो पेमेंट वाला. ओके.